Bismillahirrahmanirrahim. We were discussing about inventories, and in the last video we have discussed about the measurement criteria of inventories, which was like inventories shall be measured at lower of cost and net realizable value. And we've also discussed the net realizable value in detail. We have looked upon the definition of net realizable value, how it works, and what are the circumstances in which we need to compute the net realizable value of the inventories, and we have to see whether the cost is exceeding the net realizable value or not. Okay, and we have seen that in case the cost exceeds the net realizable value, we have to write down the inventory up to the net realizable value. Okay, so we have to reduce the carrying amount of the inventories up to the net realizable value. Okay, and that is as per the criteria. So that was the discussion in the last video. Now in this video we will look into the similar situation, but we will discuss about the accounting entries related to the net realizable value. If like we will see how the accounting entries will be done in case we need to reduce the inventory from its cost to net realizable value. Okay, so we have a similar type of situation. uh, Before moving into that example, let me explain in Urdu and Hindi as well. लास्ट वीडियो में हमने इन्वेंट्री का मेजरमेंट क्राइटेरिया पढ़ लिया था और हमने देखा था कि इन्वेंट्रीज को लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे मेजर करना होता है, और उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए जहाँ पे हमें ये लगे कि इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू से एक्सीड कर जाती है, तो फिर वहाँ पे हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू कंप्यूट करेंगे और फिर इन्वेंट्री की कॉस्ट जो रिड्यूस कर देंगे उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। हमने लास्ट वीडियो में नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे कंप्यूट होती है उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, और हमने एक सिनेरियो देखा था कि कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें कि हमें ऐसा लगता है कि अब जो है कॉस्ट एक्सीड हो गई है नेट रियलाइजेबल वैल्यू से। ठीक है, उसी तरह की एक एग्जांपल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि जब नेट रियलाइजेबल वैल्यू कंप्यूट करते हैं और इसको कॉस्ट से कंपेयर करते हैं, तो अगर हमें इन्वेंट्री को रिड्यूस करना पड़ता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, तो फिर उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी हम करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो हमें अकाउंटिंग एंट्रीज के थ्रू रिकॉर्ड करना पड़ता है ना, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है, इसको भी हम अकाउंटिंग एंट्रीज के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। तो इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे बनेंगी। उसी तरह का एक सिनेरियो है जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मोर और लेस सिमिलर है सिनेरियो, उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। नाउ लेट्स गो थ्रू दैट एग्जांपल। ABC Company is a distributor of locally manufactured tires. On June 30, 2022, ABC has an inventory of 120 locally manufactured tires at a unit cost of 6,000. Okay. During June 2022, government of the country allowed import of tires from different global tire manufacturers across the world. Import of tires was banned previously in the country. Okay, so there was a change by the government in the month of June and they allowed the import of tires. Okay, it is expected that imported tire would be sold in the local market at a selling price of rupees 5,000 each to the end customer. Okay, now let's see, the cost of the inventory they are currently holding is rupees 6,000 per tire, while the selling price of the imported tire to the end customer is rupees 5,000, which is on a lower side. So which indicates that there is a situation that the inventory cost is exceeding its net realizable value, might exceed the net realizable value. So let's see further.
The perception in the market is that quality of the imported tire is better than the local tires. Okay, market perception is there as well. Further, the government also waived the custom duty on the import of tires. So this waiver of the custom duty on the imported tires is also contributing towards a lower selling price of the imported tires. Okay, so this is a situation, okay, which indicates that we will have difficulty in selling our um stock of locally manufactured tires. Okay, because now the imported tires in the market are available, which are of better quality and which are sold at a lower selling price. So we might have a difficulty. Let's further see what information is given. After this recent change, ABC is having difficulty in selling the existing stock of tires. On June 29, the sales team of ABC informed that another tire dealer is ready to purchase all their current stock of locally manufactured tires at a price of rupees 3,500 each and is willing to sign a deal with ABC for this purchase. So they were having difficulties in selling their existing stock of locally manufactured tires, so their sales team must be struggling and searching in the market. Is there any a buyer? Is there a buyer who can purchase their existing stock? So they found a buyer, and on 29 June, their sales team informed that there is another dealer who is ready to purchase all their existing stock of locally manufactured tires at a reduced selling price of 3,500. Okay. Uh, and he is willing to sign the deal for this purchase. The management of ABC agreed to sign this deal. An agreement for sale was signed with the new dealer in first week of July 2022. Okay, so they agreed for this deal because they were facing difficulties, and in the first week of July they signed the agreement and they sold all the existing stock. Further information is given. During June 2022, ABC made tires sales of 1.5 million. During June, they purchased tires, local manufactured tires. They purchased of rupees 1.1 million, and there was no opening inventory on 1st June. Okay, so this is a scenario where they were facing difficulties in selling their existing inventories. Somehow their sales team found a new dealer and they sold their existing stock. Okay, so this is a situation, and the reporting date is June 30. Now the requirement we have given is prepare necessary journal entries related to inventories on June 30. Prepare extracts of balance sheet related to inventories as at June 30. Prepare the trading portion of income statement for the month of June 2022. Okay, so these are the requirements that we have to fulfill. अच्छा, अब इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो नहीं बिक सकेगा और हमें मुश्किल होगी अपना स्टॉक बेचने में। तो नए डीलर से हमारी डील हो गई और हमें ये पता चला कि एनआरवी जो है वो हमारी इन्वेंट्री जो है वो एनआरवी पे रिपोर्ट होगी, क्योंकि एनआरवी जो है वो कॉस्ट से कम हो गई है। ठीक है, कॉस्ट एक्सीड कर गई है और एनआरवी है हमारी 3,500। Now we have to see the accounting entries related to inventories on June 30. Okay, so इन्वेंट्री को हमें पता है कि अब राइट डाउन करना है। जब भी इन्वेंट्री को कॉस्ट से रिड्यूस करके नेट रियलाइजेबल वैल्यू तक लाते हैं तो इसे कहते हैं हमने राइट डाउन कर दिया इन्वेंट्री को, यानी कि इन्वेंट्री की वैल्यू कम कर दी। ठीक है, अब इसकी जो पहली रिक्वायरमेंट है इन्वेंट्री रिलेटेड एंट्रीज हमें बतानी है। ठीक है, अब हम देखते हैं एंट्रीज को। अच्छा, देखिए सबसे पहले कंप्यूटेशन देख लेते हैं। We need to see the computation of the inventory first. So our closing inventory was valued at a unit cost of 6,000. Okay, and we had 120 units. Okay, so 600 times 120 is equal to 720,000. So the cost of closing inventory at
cost of closing inventory is 720,000. Now we know that net realizable value is lower than the cost, and net realizable value in the data is given as 3,500, which is the selling price at which we can easily sell this existing stock to a new dealer, and we have already signed a deal with the new dealer in the first week of July. So if we compute the NRV of the inventory, it will give us 420,000, which means that we need to value the inventory at 420,000 instead of 720,000, which is the cost. Okay, and 420,000 is 3,500 into 120, which is the number of units. Okay, so there is a difference of 300,000, which is the amount of NRV write down. We call it NRV write down because this is a difference of cost and the NRV. Okay, cost was 720 and NRV is 420, so the difference is 300,000. Okay, so we need to make the accounting entry with this 300,000. Okay, and what accounting entry we will do in the books of accounts? So normally this is an expense. We need to expense out this amount, and we will debit the cost of goods sold with this 300,000, which is the amount of NRV write down, and we will credit another separate account. Instead of crediting inventory account, we will credit a separate account which is called NRV provision. We will credit NRV provision. Okay, and the nature of this NRV provision account is that it's a contra account of the inventory. Means this account will be clubbed with the inventory account. Okay, we do not credit the inventory account because just not to disturb the cost amount of the inventory. Okay, we will keep the NRV write down in a separate account, which will be a contra account of the inventory, and in the balance sheet this NRV provision account will be clubbed under the head inventories. Okay, so that inventories will be reported at a reduced amount at net of the this provision amount. So inventories will be reported at net realizable value in the balance sheet. I will show you right after this. Okay, so इन्वेंट्री से रिलेटेड जो अकाउंटिंग एंट्री है वो ऐसे है कि हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट हमें मालूम है, 6,000 पर यूनिट कॉस्ट है और 120 टायर्स हमारे पास हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कॉस्ट आ जाती है 720,000. एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमें मालूम है कि जो रिड्यूस सेलिंग प्राइस है जिसपे जो नया डीलर है वो हमसे खरीदने को तैयार है वो है 3,500. इससे हम कंप्यूट करेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री विच इज लाइक 3,500 मल्टीप्लाई बाय 120 और ये आता है 420,000. इन दोनों का डिफरेंस जो है कॉस्ट और एनआरवी का जो डिफरेंस है वो है 300,000. इसका मतलब है हमें इन्वेंट्री की वैल्यू में 300,000 से हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा. ठीक है, अब जब रिड्यूस होगा तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री को क्रेडिट करना पड़ेगा. ठीक है, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? अब अकाउंटिंग एंट्रीज की देखें आप कि सबसे पहले तो आपको एक्सपेंस चार्ज करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 300,000 को डेबिट करना पड़ेगा. ठीक है, नॉर्मली ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही डेबिट होता है. जो भी इन्वेंट्री का राइट डाउन होता है एनआरवी के लिए वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप डेबिट कर देते हैं. ठीक है, लेकिन इसके साथ जो क्रेडिट करते हैं अकाउंट आप, वो इन्वेंट्री का अकाउंट क्रेडिट नहीं करते बल्कि एक कॉन्ट्रा अकाउंट इन्वेंट्री का क्रिएट करते हैं. उसका नाम होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू प्रोविजन. ठीक है, इसकी वजह यह है कि अगर हम इन्वेंट्री का अकाउंट डायरेक्टली क्रेडिट कर देंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि इसमें से एनआरवी का कितना एलिमेंट था और इसकी कॉस्ट का कितना एलिमेंट था. ठीक है, तो इसको सेपरेट रखने के लिए हम एक इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि अगर फर्दर हमें इसको कभी रिवर्स भी करना पड़ता है, मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा कि एनआरवी का रिवर्सल भी होता है. ठीक है, तो एनआरवी को कॉस्ट से सेपरेट रखने के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करते हैं एनआरवी प्रोविजन, और उसमें एनआरवी
उस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अच्छा, ये अकाउंट इन्वेंट्री का कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। कॉन्ट्रा अकाउंट आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। कॉन्ट्रा अकाउंट जो होता है वो अपने मेन अकाउंट के साथ क्लब होकर रिपोर्ट होता है बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। जैसे सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट मैंने आपको बताया था कि सेल्स रिटर्न होता है, तो अगर आपको टोटल सेल्स दी हुई है, ग्रॉस सेल्स, और उसमें सेल्स रिटर्न भी है, तो आप जब आप एक्चुअल सेल्स, नेट सेल्स कंप्यूट करेंगे तो ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे तो फिर आपके पास नेट सेल्स की फिगर आएगी, ठीक है। और वो इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट होगी इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से इन्वेंट्री का कॉन्ट्रा अकाउंट होता है ये एनआरवी प्रोविजन, ये कॉन्ट्रा अकाउंट है इन्वेंट्री का। तो इन्वेंट्री जब बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगी तो ये एनआरवी प्रोविजन का अकाउंट भी इन्वेंट्री के साथ क्लब होगा, और इन्वेंट्री की ये क्रेडिट का है, क्रेडिट बैलेंस है, तो इन्वेंट्री का बैलेंस होता है डेबिट, तो ये दोनों नेट होके बैलेंस शीट में रिपोर्ट होते हैं, ठीक है। ये अभी आपको नजर आएगा जब हम बैलेंस शीट का सेकंड पार्ट करेंगे, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स देखेंगे हम, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर है। Now we have seen the accounting entry to write down the inventory at net realizable value. Now we are moving to the second part of the requirement, which is prepare extracts of balance sheet related to inventories as at June 30, 2022. We don't need to prepare the whole balance sheet. We only need to show the extracts related to the inventories. Okay. And what I wanted to tell you is that how inventories will be reported in the balance sheet. Let's see that. So these are the extracts of the balance sheet, okay, as at June 30, 2022. So this is the inventory account. See, this is the cost. Cost was 720,000, which is at like 120 units into 6,000 per cost per unit cost. So this is 720,000 less the NRV provision which we just saw in the entry. We will I told you that this account will be a contra account to the inventory, and it will be clubbed under the head inventory. Okay, so the net amount of the inventories which will be reported in the balance sheet will be 420,000, which is net of the cost plus the NRV write down. Okay, so the amount that will be reported in balance sheet for the inventories is 420,000. Okay, so these are the extracts of the बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट हमें बनाना है, और ये हमारा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। इसमें हमने देखा कि इन्वेंट्री जो है वो कॉस्ट पे हमने पहले शो की, और फिर उसमें से हमने लेस कर दिया एनआरवी प्रोविजन का अकाउंट, जो कि अभी हमने एंट्री देखी थी यहाँ पे, और मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्ट्रा अकाउंट है, इन्वेंट्री के अंदर ही क्लब होगा, ठीक है। और जो अमाउंट बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगा अंडर द हेड इन्वेंट्रीज वो होगा 420,000। इस तरह से ये रिपोर्टिंग होगी इसकी बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट कोई भी देखेगा उसे इन्वेंट्री का अमाउंट नजर आएगा 420,000, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि देखें ये अकाउंट जो है एनआरवी प्रोविजन का, ये अंडर द हेड इन्वेंट्री क्लब होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप इसको इस तरह से शो भी करें यहाँ पे बैलेंस शीट के फेस के ऊपर, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये इन्वेंट्री के साथ ही क्लब होगा इस तरह से कि इन्वेंट्री का जो अमाउंट है आपको लगेगा कि वो एनआरवी है, ठीक है, जो कि अभी हमने कंप्यूट करी यहाँ पे 420,000। Now we will see the last portion, last requirement, which is prepare the trading portion of income statement for the month of June. Okay, so we have seen the accounting entry related to inventories. We have seen the extracts of the balance sheet. Now we are looking into the income statement and only the trading portion of the income statement. So we have given the data, we have been given the data of regarding the sales, which is 1.5 million during the month of June. Okay, and we deducted the cost of sales, cost of goods sold. And how we computed the cost of sales is that we know that total purchases during the month of June was 1.1 million. Okay, and there was no opening inventory. So we deducted the cost, the NRV value of the inventory that we computed. So how we computed that? Like 1.1 million minus 420,000, which is the inventory valued at net realizable value. This is how
we computed the amount of cost of sales. This 1.1 million minus 420,000. 420,000 is the value of the inventory as at June 30 after the NRV write down. So this is how I computed the cost of sales, and now my gross profit is coming at 820,000. So these are the extracts of the income statement. Okay. So I wanted to show you in this example the complete picture, the accounting entries plus how the inventories will be reported in the balance sheet and the trading portion of the income statement, so that you will have complete picture related to this transaction. Okay. लास्ट पोर्शन में हमें देखना है इनकम स्टेटमेंट का ट्रेडिंग पोर्शन फॉर द मंथ ऑफ जून. अच्छा, सेल्स हमें दी हुई है यहाँ पे 1.5 मिलियन. ठीक है. इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स उसमें से लेस कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट. कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर आप देख लें. कॉस्ट ऑफ सेल्स है हमारे पास 680,000. और ये मैंने कैसे कैलकुलेट करी है, मुझे डेटा में बताया गया है कि 1.1 मिलियन जो है परचेजेस हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून. और जून के बिगिनिंग में हमारे पास कोई इन्वेंट्री नहीं थी, तो मैंने उसको ओपनिंग इन्वेंट्री कोई थी नहीं तो वो ज़ीरो हो गई. ठीक है. अच्छा, जो भी परचेजेस का अमाउंट था 1.1 मिलियन, उसमें से मैंने डिडक्ट कर दी है क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू विच इज़ 420,000. सो 1.1 मिलियन माइनस 420,000 इक्वल्स टू 680,000 विच इज़ माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है. इस तरह से मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करी. सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू माई ग्रॉस प्रॉफिट, और वो है 820,000. तो ये मैं आपको इस एग्जाम्पल में ये दिखाना चाहता था कि आपको इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू से रिलेटेड आपको अकाउंटिंग एंट्रीज भी समझ आ जाएं, आपको जो ये भी पता चल जाए कि बैलेंस शीट में इन्वेंट्री को किस अमाउंट पे रिपोर्ट करना है और कैसे उसको जो है किस वैल्यू पे एनआरवी पे कैसे रिपोर्ट करना है उसको. ठीक है. आपको अकाउंटिंग एंट्रीज जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समझ आ जाए, और आपको ये पता चल जाए कि इस अकाउंटिंग एंट्री में हम इन्वेंट्री के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करते. और उसका रीज़न मैंने ये बताया कि हमें इन्वेंट्री की कॉस्ट को सेपरेट रखना होता है और एनआरवी को सेपरेट रखना होता है, लेकिन ये क्योंकि एनआरवी प्रोविजन का अकाउंट कॉन्ट्रा अकाउंट है तो ये एक साथ ही क्लब हो जाते हैं. ठीक है. और इसको सेपरेट क्यों रखना होता है, ज़रा आप सोचें कि जब इन्वेंट्री का अकाउंट यूज़ हो रहा है और आप कोई कॉस्ट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं और आपको वहाँ से एवरेज कॉस्ट कंप्यूट करनी है, तो आप इन्वेंट्री के अकाउंट को क्लीन रखते हैं, उसको उसमें सिर्फ इन्वेंट्री की कॉस्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस बुक करते हैं. जो एनआरवी बुक करते हैं वो आप सेपरेट एनआरवी प्रोविजन के अकाउंट में बुक करते हैं. ठीक है. अच्छा, ये तो हमने देख लिया एंट्री, फिर हमने बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट देख लिए, फिर हमने ये भी देख लिया कि इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास किस तरह से जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी और कैसे जो है ना हमारे ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट होगा, ये हमने देख लिया. ठीक है. नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एनआरवी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें बताऊंगा, और मैं आपको एक ऐसा सिनेरियो बताऊंगा कि अगर सर्कमस्टांसेस रिवर्स हो जाएं. ठीक है. यानी कि जैसे इस सर्कमस्टांसेस, इस एग्जांपल में हमने ये देखा कि हमारी जो कॉस्ट है ना वो ज़्यादा हो गई है हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू से. कभी ऐसा होता है कि बाद में जो है ना ये सर्कमस्टांसेस अगर रिवर्स हो जाएं. ठीक है. फॉर एग्जांपल जो है ना लोकल जो है इंडस्ट्री का बड़ा प्रेशर आ जाए गवर्नमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट को अपना डिसीजन वापस लेना पड़े और वो दोबारा बैन कर दें इंपोर्ट ऑफ टायर्स. ठीक है. तो फिर उस सिनेरियो में अगर सब्सिक्वेंटली ये चीज़ हो जाए तो फिर हमें जो एनआरवी हम पहले बुक कर चुके हैं उसमें हमें क्या करना पड़ेगा. वी विल गोइंग टू सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियोस. ओके. So in the next videos, we will see if these circumstances change, what we need to do with the NRV that we booked for the inventory, or and we will also see if that inventory is already sold, what we need to do. Okay, so we're going to see that in detail in the next videos. Okay, I hope till now the topic is clear, and if you have any questions, you do comment on the video. And if you didn't subscribe the channel, kindly subscribe this channel and share this video as much as you can. Now I'm concluding this video. Thank you.